Sometimes in life we feel helpless when we're alone. There's so much darkness, but we forget what Allah taught us, that we are strong when we help each other. This pain that you feel, we all feel this pain the same, and we will be standing here together forever. No matter what life will throw, we can conquer if we stand together. So let's stand together forever, inshallah. Oh Lord, as long as you're with us, please, then all our pains worth every penny. Each day and night, let's pray to our Lord that we can fight all forms of sorrow. This pain that you feel, we all feel the pain the same, and we will be standing here together forever. No matter what life will throw, we can conquer if we stand together. So let's stand together forever, inshallah. What you're feeling has a meaning, so keep believing. Let's talk healing. Oh Ummah, do not worry, your tears are heard by the Almighty. This pain that you feel, we all feel the pain the same, and we will be standing here together forever. No matter what life will throw, we can conquer if we stand together. So let's stand together forever, inshallah. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन लोगों के पास अगर वो रोज़ घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो उनके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लॉकडाउन का सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन किसी कंट्री में लागू होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके घर के अंदर बाकी चीज़ें तो छोड़िए, खाने का भी मसला हो जाएगा, वो खाने को मोहताज हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से जो मेरी बात को सुन रहे गुजारिश करूँगा कि ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करें, ऐसे हालात के अंदर आप लोग खाने का इंतज़ाम करें दूसरे लोगों के लिए। आप है तो आपके पड़ोस में कोई गरीब है तो उसको दे, हो सकता है कोई इंसान आपसे मांगेगा नहीं, लेकिन आपको ऐसे हालात को देखना और समझना है। गुजारिश और अपील करूंगा अल्लाह के लिए, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ खाने का, मेडिसिन का, दवाओं का और ज़रूरत की चीज़ों का इंतज़ाम करें। वो आपका दूसरा भाई जो है मुस्लिम हो सकता है, गैर मुस्लिम हो सकता है, उससे कोई तमीज़ मत कीजिए, मतलब कोई भी हो वो, इंसानियत की मदद कीजिए, क्योंकि इंसानियत जो है बड़ी अहम चीज़ है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा मेरे सुनने वालों से कि वो ज़रूर जो है लोगों के लिए खाने वगैरह का जो है इंतज़ाम जो है करें। लेकिन